everybody, welcome back to Cricket Tracker's special show In the Air with me, Navedna Prabhu. I hope all of you are excited for the second ODI to be happening between India versus West Indies. Aapke kya predictions hai? Let me know that in the comment section. And without wasting any more time, let me bring on my first guest on the show, Gauri, joining me once again to find out unke hisab se what's going to be happening. Of course, the second ODI, her smile says it all. She's very confident. She's looking very positive. Ki the second one will also go in India's favor. Lekin a lot of talk about that playing 11 combination as well, Gauri. Sabse pehle, let me get your first thoughts. What are we looking at going into the second ODI? Do you think West Indies will look to, of course, capitalize this one? But in terms of changes, are you predicting anything? I think, of course, West Indies will try to strike a comeback. But given that India are playing on home, तो I think एक सीरीज का जो है वो सीरीज विन की तरफ वो देखना चाहेंगे. I think इसके लिए वो आगे बढ़ना चाहेंगे. फर्स्ट मैच में आपने देखा कि कितने अच्छी तरीके से हमने मैच जीता एंड वी हैव रिस्ट्रिक्टेड देम टू अ वेरी लो स्कोर गोइंग इनटू द गेम. सो आई थिंक व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन द होम कंडीशंस यू विल ऑलवेज लाइक टू कैपिटलाइज थिंग्स एंड वांट थिंग्स टू go in your favor. So I think moving into that section, I think India will look to have the series in their favor. Playing combinations की जैसे आप बात कर रहे थे तो हमारे पिछले मैच में था तो काफी सारा जो हमारा स्क्वाड था that was out due to COVID thing. So given that they are coming back, अभी रोहित शर्मा आ रहे हैं टॉस की उन्होंने शिखर धवन was seeing वो भी आते हुए देख रहे थे. तो अब ये देखना बनता है क्योंकि केएल राहुल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे फ्रॉम द सेकंड ओडीआई ऑनवर्ड्स, राइट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल कि वो उनको भी ऑब्वियसली वे कैन सी कि ईशान किशन को नहीं प्रेफर किया जा सकता है उनकी जगह पे. तो आई थिंक ही विल मेक अ प्लेस इन द ओपनिंग सेक्शन. सो आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस बट दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव चेंजेस, आई बिलीव. That's right. And of course, talking about that word positive in the pandemic era is not something that all of us want to hear. But in this context, of course, it looks like there will be certain permutations and combinations that Team India will have to kind of work on. The bigger question is who's going to be sitting out in this particular match. So, aap sab mujhe bataiye, for everybody who's saying hello, Manish, Mohammed, as well as Rahman, hi to everybody. Thanks for joining us on the show. Usi ke saath, let me bring on my next guest, Gaurav, joining me once again back in the studios after a very long time. Gaurav, welcome back. Great to have you. Gauri, of course, gave her thoughts as to what we're looking at, especially in terms of the changes or what Team India would be looking to do. On the other hand, what are you predicting for West Indies in terms of a combination? See, I think the sort of performance West Indies had in the first game, I mean, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो completely outplayed हुए थे. I mean, on the same track जहाँ पर West Indies 177 बनाता है, they got bundled out in 45 or 46 overs, even 43 overs like that. और उसके बाद इंडिया उसी पर्टिकुलर ट्रैक में एक सेकंड स्ट्रिंग साइड होने के बावजूद हमारे पास शिखर धवन अवेलेबल नहीं है, श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे फर्स्ट क्लास आई मीन फर्स्ट चॉइस के प्लेयर्स हैं प्लेइंग 11 में. एंड इफ यू लुक एट आवर bowling lineup, we don't have the likes of Jasprit Bumrah, Mohammad Shami. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया somewhat had a second string side just as West Indies. वो भी कुछ players, I mean शिवराज हिटमायर और एवन लुइस तो मिस कर रहे हैं. बट आई थिंक अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने अपने हिसाब से जो उनके पास अवेलेबल प्लेयर्स है उनमें से काफी अच्छी एक स्क्वाड चुनी थी. लेकिन the players need to like step up. The likes of Nicholas Puran, Karen Pollard. I mean, you can't afford to get out on a golden duck जबकि आप वेस्ट इंडीज के कैप्टन हैं और एक ट्रिकी सिचुएशन है. तो दैट वाज अ केयरलेस शॉट जो कि हम लोग काफी ऋषभ पंत के लिए वर्ड यूज करते हैं. तो आई थिंक यही स्ट्रेटेजी ये होगी कि ना क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, जो सीनियर प्लेयर्स है उनको स्टेप अप करना पड़ेगा. कि वहां रोज आए थे इंडिया के स्क्वाड में, उनके पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. तो गाइस लाइक दीस नीड टू स्टेप अप. तो मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में तो हम बहुत ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं. टैक्टिकल कुछ हो सकते हैं लेकिन आई थिंक वेस्ट इंडीज के लिए यही होगा कि उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स अपने इंटरनेशनल अरीना में अपना मेटल प्रूव कर चुके हैं, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा. नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा पहले ओडीआई में हमने देखा कि इंडिया एक वन साइडेड विक्ट्री रजिस्टर कर लिया, वैसा ही हो सकता है. Okay, what are your predictions, everybody? Let me know in the comment section. I'll quickly come to the toss aspect as well as the playing 11. We have both of that in for you. West Indies have won the toss and chose to bowl first. Do you think this is a good strategy? आप सब मुझे बताइए comment section में. And talking about strategy and what somebody else also thinks about the playing 11, I'll also have Chirag joining me on the show. Chirag, welcome back on In the Air on Cricket Tracker. सबसे पहले, interesting to see that I think Gaurav had also predicted. Gauri also was looking at this aspect ki Ishan is out and KL is in. Do you think that's a good move, and what do you think of the playing 11 combination?
निवेदना देखो, अभी मुझे लगता है कि दीपक चहर की जगह प्लेइंग 11 में बनती थी, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका में थर्ड वनडे मैच में कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो उन्होंने सोचा नहीं हुआ कि मैं पहले वनडे में बाहर बैठूंगा। तो ठीक है, अभी चलो आपने फर्स्ट वनडे में नहीं खिलाया, तो सभी ने जस्टिफाई किया अपने सिलेक्शन को, ऐसा नहीं कोई खराब खेला, फिर चाहे वो ईशान किशन हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, दीपक हुड्डा हो, सभी ने जस्टिफाई किया अपने Right. सिलेक्शन को। पर दीपक चहर की जगह आई थिंक आज के मैच में बनती थी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 1-0 अप है। तो दीपक चहर को क्यों नहीं आप रख रहे? शार्दुल ठाकुर को उन्होंने रखा, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा एक्सपेंसिव भी नहीं रहे, 2 विकेट लेस रहे, पर आज मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में दीपक चहर की जगह होनी चाहिए थी। Okay, so that is of course Chirag doesn't look like Chirag. I thought a new person had joined us on the show. Chirag, like your twin brother, probably. But what do you all think about Joe? Chirag's point of view in terms of the playing 11. Let me know in the comment section. Let's also take a quick look at the head-to-head as well as India's record at this particular stadium. यहाँ पे 134 matches have been played. जहाँ पे India has a slight upper hand of having 165, and the West Indies have 163 matches. On the other hand, if you could take a look at India's record at this stadium as well, and then I'll come quickly to Gauri to give me her viewpoint about this. I know Gauri always says ki, sometimes the stats are just stats at the end of the day, but looking at this Totally. competition, if you could also take, have a quick word about the fact that we're looking at that 100 and 1000 ODI. We've been talking so much about these milestones as well. So, Gauri, quickly, this is one aspect of Team India, but also a very, very special ODI today for one person in particular. आई थिंक डेफिनेटली ओडीआई, जैसे हमने 1000th ओडीआई जब लास्ट टाइम खेला था, वी वॉन दैट मैच, और उस टाइम पे सिर्फ इट वाज नॉट ओनली अबाउट द 1000th ओडीआई, इट वाज आल्सो अबाउट रोहित शर्मा बिगिनिंग हिज फुल टाइम कैप्टनसी स्टिंट। तो आई थिंक वो उसको एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टार्ट मिलनी चाहिए थी, तो वो जो उनको मिली, क्योंकि पहले उन्होंने काफी मैचेस को ओडीआई में किया है कैप्टन, बट दैट इज नॉट अ वेरी सब्सटैंशियल, हमारे पास बहुत ज्यादा कोई डेटा नहीं है कि उन्होंने कितने ज्यादा मैच, क्योंकि वो जो हमारे पास चंक है वो काफी कम है, तो उसके बेस पे एवरेज आउट करना वाज लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन वो अभी से उनका फुल टाइम कैप्टनसी स्टिंट स्टार्ट होता है, तो आई थिंक उसको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इवन आफ्टर विनिंग द टॉस, इंडिया वेंट ऑन टू विन द मैच एज वेल, सो दैट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। आज हमारे पास टॉस हमारे फेवर में नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट्स क्या हमारे पास हो सकता है। जैसे कि यू ऑलरेडी सेड दैट फॉर द स्टार्ट्स, आई वुड लाइक टू से कि दिस इज नॉट though it doesn't tell the whole story, but I think इस चीज पे आपका बिलीफ और ज्यादा फर्म हो गया होगा when you saw India's journey in T20 World Cup, what the stats said, what the records were, and what is everything and what we ultimately had in hand. So I think not to believe on them much, but given that we are still having a slight upper hand, so I think it will be all positives for India going in the match. You said that, and Gaurav was just like, really? You're saying that stats don't matter. But coming back to another aspect that we look forward to is the player battle. So if you could take a look at that, and of course get Gaurav's viewpoint as to सबसे मजेदार battle उनके हिसाब से क्या होगा. Of course, Chahal was fantastic in the first ODI, Gaurav, but looking forward to this particular match. Who can really be troublesome for the West Indies side from the Indian bowling attack? Would you place your bets on Chahal again? Definitely, why not? Because the sort of bowling performance he put up in the previous game, I mean, it was phenomenal. Because it's a sort of mental challenge for him. Because हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अपना कमबैक किया था साइड में, साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा टूर नहीं किया था, एंड आफ्टर दैट रविचंद्रन अश्विन को एक्स कर दिया गया था। तो एक ये अल्टीमेटम सॉर्ट ऑफ चाहल के लिए भी था कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ डेज वेरी मच लेस ओडीआईज आर गोइंग टू हैपन। और हमने देखा है कि टीम में इंक्लूड हुए हैं कुलदीप यादव, उनको वापस बुलाया गया है, रवि बिश्नोई को इंक्लूड किया गया है। तो ऑब्वियसली आई थिंक युजवेंद्र चहल के पास बहुत ज्यादा रेस्टिंग टाइम नहीं था, उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता था अपना, अगर जो वापस अगर साइड में मतलब जो प्लेइंग इनिशियल प्लेइंग 11 में अपना उनको जगह सीमेंट करना था। तो इट इज एग्जैक्टली दैट, आई मीन कंडीशंस का बहुत अच्छे से उन्होंने फायदा उठाया, उनको टर्न मिला, उनको ग्रिप मिला, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉलिंग की, तो काफी लोग बोल रहे थे चहल 2.0 हमारे सामने आए हैं, तो वो भी कह सकते हैं, बिकॉज ही इज समवन हु कीप्स इंप्रूविंग कंसिस्टेंटली। तो एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, और सेम ट्रैक है, सेम कंडीशंस है, और उनको शाम को बॉलिंग करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चैलेंज ज्यादा होगा, बिकॉज वहां पर ड्यू फैक्टर आएगा। और हमने देखा है कि जैसे जैसे मैच यहाँ पर प्रोग्रेस होता है, तो बैटिंग के लिए विकेट ईज आउट हो जाता है, तो चैलेंज ऑब्वियसली आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जिस प्रकार का वेस्ट इंडीज का बैटिंग लाइनअप है, काफी डिप्लीटेड है, आज तो कैरन पोलार्ड भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं बैक कर रहा हूँ चहल को कि एक अच्छा स्पेल वो वापस कर सकते हैं। Yeah, we do know that there was this advice that came from Kohli to
to Chahal from Kohli, and then we know what Ulta happened dal. to Pollard's wicket. But we probably will be seeing some other advice to some other batter. Lekin Chirag, coming to you, another two-player battles that we can look forward to is between KL Rahul and Holder. On the other hand, Rohit versus Roach. So which one are you looking forward to personally? वेल केएल राहुल और ये होल्डर की बहुत अच्छा ये बैटल देखने को मिलेगा, नो डाउट। लेकिन केएल राहुल एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आएंगे सेकंड वनडे मैच में, तो आई थिंक केएल राहुल हैज द अपर हैंड। तो हाँ, होल्डर एक अच्छे बॉलर है, लेकिन केएल राहुल इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे है। Okay, and if we could take a look at the other player battle as well. Okay, that is 3 dismissals, Rohit versus Rohit. So all of you tell me in the comment section. And coming back to a quick question, I'm going to be asking Gauri. Yahan pe Adi has asked us, do you think that West Indies should play Jason Holder at the 6th or 5th position, as he's batting good in a few times? What is your take on this? आई थिंक जो क्वेश्चन है, आई थिंक क्योंकि वेस्ट इंडीज के जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो जैसे कि गौरव ने कहा वो डिप्लीटेड है क्योंकि कारण पोलार्ड उनके जो कैप्टन थे वो आज फिर से नहीं खेल रहे हैं। बट गिवन दैट कि वेस्ट इंडीज का जब अपनी बैटिंग ऑर्डर आप देखते हैं तो वो काफी डीप जाता है। आप ये देखिए, अगर उनके प्लेइंग 11 में से, उनके बैटिंग सेटअप में से अगर एक भी कोई चल गया, ये दो, क्योंकि उनका हमेशा वेस्ट इंडीज किस लिए जाने जाते हैं, बहुत फायर बहुत फायरी नॉक्स खेलने के लिए, बहुत ही क्विक फायर खेलने के लिए। तो आई थिंक उनकी अगर बैटिंग लाइनअप में से कोई चल गया, जो है, या दो चल गए ऑन द गिवन पर्टिकुलर डे, तो आई थिंक उनका मैच पूरा पलट सकता है। तो गिवन दैट जेसन होल्डर के पास जो स्किल्स है, मे बी उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहे वो 5th और 6th पे खिला के, तो आई थिंक दैट मे बी अ राइट कॉल फॉर देम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप राइट कॉल उसी को कह सकते हो जो आपने रिस्क लिया, दैट वेंट ऑन टू बी जस्टिफाइड। तो आई थिंक ये कॉल लेना उनके लिए बिल्कुल ठीक हो सकता है कि अगर वो आज पहले वो भी कर रहे हैं, तो आई थिंक दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। Okay, I think we hope that answers your question. Yeah, Chirag? वैसे जेसन होल्डर 7th पर आते हैं, लेकिन सिंस 2015 वर्ल्ड कप ऐसा बहुत बार हुआ कि जेसन होल्डर मतलब 25 ओवर टीम के होते नहीं, वो जेसन होल्डर क्रीज पर आ जाते हैं। तो ऐसा टॉप ऑर्डर उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब रहा है। तो जेसन होल्डर चाहे 5th पे है, 6th पे है, लेकिन 25 ओवर से पहले वो क्रीज पर होते ही, तो मेरे लिए इतना मैटर करता नहीं है। Okay, so this is of course Chirag and Gauri's viewpoint. Adi, you tell me in the comment section who do you agree with, and if you have any other questions, put that in the comment section. And also, let's take a quick look at what the approaching milestones in this particular match is. I'm pretty sure there's some exciting ones, but let's find out from Gaurav what is the most doable yahan pe, if we could take a look at other milestones as well. ऋषभ पंत का डुएबल है, ये तो है। Let's not jinx it, Chirag. You never know. आई थिंक जितने भी दिखाए गए अभी सारे डुएबल हैं, बिकॉज किसी और बैटर की हम लोग बात करते हैं उसको 5 6 मारना है एक ओडीआई इनिंग्स में, तो डेफिनेटली आई थिंक हम लोग बोल सकते थे कि डिफिकल्ट है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, बिकॉज वो पहली बॉल को भी छक्का मार सकते हैं, इनिंग्स की लास्ट बॉल को भी छक्का मार सकते हैं। उनको जो मास्टरी है पुल शॉट में, स्पेशली वेस्ट इंडीज की बॉलर्स की बात करें, वो शॉर्ट पिच करना काफी पसंद करते हैं, समवन लाइक जेसन होल्डर और उनके जो बाकी फास्ट बॉलर्स भी हैं, वो पिच में जो बाउंस है उसको यूटिलाइज करना पसंद करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो लास्ट 5-6 साल में हो रहा है ओडीआई क्रिकेट में, पर्टिकुलरली नॉट पर्टिकुलरली इन टेस्ट क्रिकेट, वो रोहित शर्मा के फेवर में जाता है कि इनिशियली प्लान होता है बॉलर का कि हम लोग पावर प्ले में ना जो बैटर है उसको एक बाउंसर से चकमा दें या उसको आउट करने की कोशिश करें। एंड रोहित शर्मा इसको बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करते हैं, दो पुल शॉट्स हैं, उनके अलावा भी उनके जो लॉफ्टी शॉट्स हैं, उनके ड्राइव्स हैं काफी अच्छे हैं। सो आई थिंक अगर ये बैटिंग ट्रैक वैसे ही होता है, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है बैटिंग ट्रैक, बिकॉज हमने जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि बाद में जो ड्यू फैक्टर आता है और बैटिंग के लिए कंजेशन थोड़ी ईज आउट की हो जाती है। अभी इनिशियली बैटिंग कर रहे हैं तो चैलेंज थोड़ा सा रहेगा, लेकिन एक फैक्टर ये रहेगा कि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, मतलब कि उनको 50 ओवर खेलने का मौका मिलेगा। शायद ऐसा होता कि अगर वेस्ट इंडीज पहले करता तो वापस ऐसा ही कुछ स्कोर हो जाता और इंडिया उसको 20 या फिर 22 ओवर में चेस कर देता। सो डेफिनेटली आई थिंक रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज है, 3 दोहरे शतक हैं वनडे क्रिकेट में, किसी के पास 2 भी नहीं है, तो दिखाता है कि किस लेवल के बैटर है। और बाकी माइलस्टोन्स में देखिए, विराट कोहली को 25 रन चाहिए, ऋषभ पंत को 1 रन चाहिए, केएल राहुल 37 रन। आई मीन दीज गाइज आर लाइक दे हैव बीन इन फाइन फॉर्म। और मैं अगर मैच अगर अच्छा चला, जो कि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है और ये बैटिंग माइलस्टोन्स है, तो मेरे ख्याल से चारों के चारों इक्वली डुएबल हैं। Okay, doable is the word from Gaurav, but this another milestone which is quite special. Gauri, I'll come to you. Virat Kohli has of course played 99 ODIs at home, and today will be his 100th match as well. यहाँ पे अगर देखा जाए, we were seeing West Indies, if we could take a look at that once again, approaching milestones, and
If you could just, summarize all of this for us, Gauri, including Kohli's. I see a question coming in about what is wrong with Virat Kohli's form, but let's today take a look at the positive side of it. Okay, so Yeah. let's also take a look at that is a huge milestone for any player at the end of the day, but also looking at the Yeah. West Indies approaching milestone. आपका क्या कहना है? आई थिंक जब आप विराट कोहली की बात करें तो क्वेश्चन इज कमिंग अबाउट हिज फॉर्म और व्हाट इज रॉन्ग विद हिज फॉर्म। तो आई थिंक अगर आप जैसे ये बात हुई थी कि पिछले ओडीआई में जब वो आए थे जिस फॉर्म के ऊपर वो एंटर किए थे तो वो ये था कि दैट वाज नॉट कमिंग, उनका जो जो उन्होंने स्टैंडर्ड कर रखा है उसको नहीं मैच कर रहा था, बट ही वाज स्टिल चिपिंग इन विद दोस क्रूशियल रन्स, राइट। अगर Yeah. पिछले मैच में भी आपने देखा तो दैट स्टार्ट वाज वेरी फायरी। वो जो स्टार्ट दिया था उन्होंने 2 इतने अच्छे शॉट्स खेले थे, वो इट वाज लुकिंग, आई डोंट नो कि वो क्या ही हो जाएगा, लेकिन आई थिंक वन दैट शॉट एंड ही वेंट ऑन। सो आई थिंक फैंस का वही जो है वही कंटिन्यू हो गया कि दैट 71st सेंचुरी एंड दैट इज नॉट कमिंग एंड ऑल दैट। सो आई थिंक उसके बेस पे अगर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज रॉन्ग विद हिज फॉर्म, तो आई थिंक इफ यू आर समवन हु इज जस्ट लुकिंग फॉर दोस 3 फिगर थिंग और कि वो 100 उनको मिल जाए, वो तो देयर इज समथिंग विद हिज फॉर्म। बट आई थिंक जहां तक बात है कि कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के देने के लिए, तो आई थिंक वी कैन वेरी मच एक्सपेक्ट कि वो विराट कोहली देंगे टीम को। वी कैन नॉट जस्ट राइट हिम ऑफ कि वो जो है बिल्कुल भी चिप इन नहीं करेंगे। और जहां तक आप वेस्ट इंडीज के माइलस्टोन्स की बात कर रही हैं तो आई थिंक वो भी कुछ हद तक डुएबल लगते हैं। निकोलस पूरन की जहां तक बात की तो आई थिंक वो भी लग रहा है हो जाएगा। बट टॉकिंग ऑफ दोज इंडिया के माइलस्टोन्स की जैसे आपने बात की, तो आई थिंक आई एम वेरी मच बैकिंग फॉर दैट रोहित शर्मा 5-6 because like Gaurav said, he can give on the first ball itself, he can do it on the last ball itself, and we got to see that in the first ODI also. What kind of shots he was playing. So I think 5-6s, maybe someone says that's a far too fetch it, but I believe that's Yeah. quite doable. Okay, so tell me, everybody who's tuned in, मुझे बताइए, predict Rohit Sharma's score for today's match. Kohli, of course, we'll keep him aside for today's match. There's almost so much of conversation always happening about that 100. So tell me, predict Rohit Sharma's score in the comment section. And before we wrap up, let's take a quick look at social tracker पे क्या हो रहा है. And I will ask Chirag to tell us what are the tweets looking like, what are the conversations looking like on social tracker. If you could take a look. Rohit Sharma as captain not lost a single ODI match while chasing down the target. Well, रोहित शर्मा के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमारे सामने है। मैच डे, ऑल द बेस्ट किंग यानी कि कोहली एंड मिया यानी कि मोहम्मद सिराज। ऑल वी वांट दिस ओल्ड विराट कोहली बैक सून। वही 71st सीरीज, हर जगह वही कहानी फिर एक बार। No one will ever be able to remove Virat Kohli from captaincy, no matter who is the captain. Well, seriously, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखना कि विराट कोहली अपना एक्सपीरियंस जब प्लेयर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। दो कैप्टन नहीं है, लेकिन लीडर तो लीडर ही रहता है ना। Okay, on that very positive note, I also have Simon coming back and saying, according to him, Rohit Sharma is going to score 150. Great. If he scores 150, I don't think anybody is disappointed मुझे लगता about है it. 80 to 90 के बीच में रोहित शर्मा का स्कोर जाएगा आज। Okay, so Chirag has said between 80 to 90 and Simon has said 150. To find out who is right and who is wrong, don't forget to join us in the post-match analysis of the second ODI between India versus West Indies. We at Crick Tracker want to thank everybody for joining us and I want to thank my guests as well for coming on the show. We will see you on the other side. But until we see you next time, like I always say, stay tuned to Crick Tracker for the latest news in the world of cricket.